Start. While the matter was pending before the assessing authority, the petitioner approached this court through the present writ petition stop. A bench of this court directed the issue of notice of motion stop. The respondents filed a written statement along with the reply copy of the assessment order were collectively produced as annexes R1 stop. The petitioner amended the writ petition so as to challenge not only the notices at annexes P3 to P6 but also the orders of assessment copies of which have been produced as annexes P11 to P14 stop. The petitioner maintains that the action of the respondents in treating purchase of paddy as accessible to the levy of tax is contrary to the provisions of section 5 and 15 CA of the 1956 Act stop. It prays that the notices as well as the orders of assessment be quashed stop. The respondents places reliance on the written statement filed in reply to the original unamended petitions stop. In this written statement, it has been inter alia averred that the petitioner is a registered dealer stop. It is engaged in the purchase, husking of paddy and selling of rice stop. Since the purchase tax had not been paid, notices were issued to the petitioner for levy of purchase tax by way of provisional assessment under section 28B of the State Act stop. The petitioner did not join proceedings before the assessing authorities to represent its case. The submitting a reply to the notice stop. Assessment orders in respect of notices issued to the petitioner were passed on merit copies of orders and closed as annexes are one stop. The petitioner has a right of appeal from that order stop. It has approached the Honorable Court without exhausting the remedy of appeal. On this basis, it is maintained that the writ petition is not maintainable stop. On merit, it has been pointed out that the purchase of paddy in the circumstances of the case is accessible to the levy of tax stop. The effect of section 15 CA is only to override and effect of this Honorable Court's judgment is United Rice Land Limited and another versus the State of Haryana and others, one in as much as the purchase of paddy by the rice mill come direct exporter by virtue of legal fictions of section 5 became purchased in the course of export under section 5 of the Central Act stop. But this legal fictions does not extend further to the present petition who purchased paddy from the market in his own right and milled it stop. The sale of rice by the petitioner to the direct exporter is sale in the course of export out of India stop. Section 5 does not protect the purchase of paddy by the petitioner stop. Thus, the claim as made by the petitioner has been controverted stop. It has been further pointed out that the petitioners claim that its representative had appeared before the assessing authority on 26 June 2000 or that it had sought permission to place H forms or ST 15A forms on record is false. Stop. Hi student. डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको
लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है, ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।